Smith. How are you? I hope all you are well. Please open your SST book. Chapter number 5 in civics, page number 249, and that is the Indian judicial system. Actually, we have already started this chapter in our classroom, but because of the vacation, we couldn't complete it. We have just started now. So, from today onwards, I'll teach you through online mode, and we'll start this chapter from the beginning. So, let's start the Indian judicial system. What are the characteristics of it, why it is needed, what is the structure of this system, what are the duties of this system. So all these points we will study or we will discuss in this chapter. So let's start the judiciary. कैसी जुडिशरी है इंडिया की? The Constitution of India provides for an independent judiciary. Indian Constitution, what kind of judiciary is providing by the Constitution of India? It is an independent judiciary. Means our Constitution providing our Constitution providing a judiciary which is independent. What is the meaning of independent? Means no one can interfere in its work. It means that the legislature and the executive cannot interfere in the work of the judiciary. जुडिशरी के काम में कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता, वेदर इट इज़ लेजिस्लेचर और द एग्जीक्यूटिव. If the constitution is providing this power or this independence to this system or to this body of justice, so it is the duty of the judiciary. There should be some duties of it. So it is the duty of the judiciary to uphold the provisions of Indian Constitution. What is the first duty of this body? The first duty is it has to uphold the provisions of the Indian Constitutions. Means जो Indian Constitution के जो provisions है उनको uphold करके रखना, means उनको बनाए रखना. And it is a body that upholds law. और क्या काम करती है ये? Law upholds करती है, of course, punishes the guilty. And if someone is proved to be guilty, this body will punish him and settle disputes. Disputes, you know, conflicts. If there is some kind of conflicts between two persons, between two states, or between two districts, this body settles them also. It safeguards the basic rights of the citizens of India. And what is another work? And very important work. It safeguards whatever the basic rights are given by the Constitution of India to its citizens. It safeguards them, and these rights are called fundamental. I've told you now that there are some fundamental rights in our constitution which is given to the Indian citizens. So इन्हीं को basic rights भी कहा जाता है. तो why it is called the fundamental? Fundamental क्यों कहा जाता है? Because any infringement of these rights can be challenged by any citizens of India in the court of law. यानी एनी इन्फ्रिंजमेंट ऑफ दिस राइट्स, कोई भी इन राइट्स को किसी भी तरीके से मतलब इस पर वो जिसका ये बेसिक राइट है, बेसिक राइट के अगेंस्ट जाकर कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है. और अगर ऐसा किसी को फील होता है कि उसके बेसिक राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट किया जा रहा है, तो इसके लिए वो कोर्ट में जा सकता है और इस एक्ट को चैलेंज कर सकता है. यू सी दिस वर्ड infringement. What is the meaning of infringement? Infringement means an act that limits someone's right or freedom. Check. Now you can understand what is the duty or what is the work of this judicial system. Means no one can interfere. First one was it is an independent body, of course, or no one can interfere in its work, and it safeguards the basic rights of Indian citizens. And if someone is feeling that his or her fundamental rights are being infringemented, so he can go to the court. Then, and what is the structure now? We will see the structure of this judicial system. The Indian judicial system is structured on the British system of judicial administration
based on the concept of rule of law. इंडियन जुडिशियल सिस्टम की बात कर रहे हैं और इसका स्ट्रक्चर बेस्ड है ब्रिटिश जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन पर. वाई इट इज़ सो? ऑफ कोर्स इट इज़ नेचुरल बिकॉज इंडिया वॉज वन ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनीज. यू नो कि इंडिया में बिफोर द इंडिपेंडेंस देयर वर ब्रिटिशर्स. ठीक, देयर वर ब्रिटिश रूल इन इंडिया बिफोर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया. सो इट्स नेचुरल. ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, the Indian High Courts Act 1861. Which act? The Indian High Courts Act 1861 established the high courts at Bombay, Mumbai, Calcutta and Madras. Means एक एक्ट आया 1861 में जिसे क्या कहा गया, इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट. एंड इस एक्ट के बाद इन मुंबई, Kolkata and Madras high courts were established. The Government of India Act, and after this another act came into force, and that was Government of India Act 1935. And after this led to the foundation of the Federal Court of India. And after this इंडिया में फेडरल कोर्ट की फाउंडेशन रखी गई. ठीक, इंडिया में यू कैन से दैट द फर्स्ट टाइम इन इंडिया फेडरल कोर्ट वर established after the act of Government of India Act 1935. It was substituted by the Supreme Court of India when after the independence India adopted the constitution in 1950. इंडियन ने आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया? 1950, 26 जनवरी 1950. यू नो दैट. सो जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर हो गया और इसको पूरे इंडिया में अडॉप्ट कर लिया गया, देन द सुप्रीम कोर्ट रिप्लेस द फेडरल कोर्ट्स. सुप्रीम कोर्ट से पहले यहाँ पे फेडरल कोर्ट हुआ करते थे, लेकिन आफ्टर द इंडिपेंडेंस इट रिप्लेस दैट फेडरल कोर्ट एंड नाउ in India there is Supreme Court. Now you understand? Now I understood the structure of judicial system. तब हाई कोर्ट यहाँ पे स्टार्ट हुए, and when federal court started in India, and which courts replaced the federal court? You are getting understand what I am teaching to you? Listen carefully, okay? Let's move on. However, a number of modern scholars associated with Indian judicial system believe that the true meaning of the concept of equality before law has been realized only after the independence of India. You know what? Many modern scholars who are associated with Indian judicial system, they believe that India जो true meaning, the concept of equality before law is only realized after the independence of India. Why it is so? There was court before the independence also, but you know that Britishers, they treat Indians not equal. Okay, so before the law also there was no equality, but after the independence, when we got independence, after that the real concept of equality before law has been realized. Means now if you are belonging to any powerful person, if you are belonging to any it doesn't matter in front of law that you belong to any particular caste, particular religion, or you are the son of any powerful leader. It doesn't matter in front of the law. So everyone is equal before the law. That is the meaning of equality before law. The Indian judiciary has earned for itself a unique distinction as one of the most efficient judicial system of the world. You know what? जो Indian judiciary system है, it is one of the most efficient judicial system. It is considered as one of the most efficient judicial system of the world. You know the meaning of efficient? What is the meaning of efficient? Efficient means able to work without making mistakes. So now it is considered as one of the efficient judicial system of the world. Okay. Now there's just see
Useful information. There are 2 points in useful information. First is rule of law. The rule of law requires the government to exercise its power in accordance with well-established and clearly written rules, regulation, and legal principles. Rule of law means Constitution, of course. Constitution क्या है? It's a rule of law, book of rules और written rules. ठीक है. So क्या है ये? The rule of law क्या है कि जो भी गवर्नमेंट है वो अपनी पावर को किसके अकॉर्डिंगली काम करेगी, मतलब वो जो कुछ भी काम करेगी वो किसके अकॉर्डिंग करेगी? वेल इस्टेब्लिश एंड क्लियरली रिटन रूल्स. कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? क्लियरली रिटन रूल्स हैं, यानी कि कोई भी गवर्नमेंट है वो अपने सारे एक्ट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ही करेगी. उसकी जो लीगल प्रिंसिपल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, जो रूल्स हैं और जितनी भी सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में हैं, गवर्नमेंट के सारे एक्ट अकॉर्डिंगली ही होंगे. और द सेकेंड पॉइंट इज़ इक्वलिटी बिफोर लॉ. हम पहले ही इस टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं. व्हाट इज़ इक्वलिटी बिफोर लॉ? सी, equality before the law or equality under the law or legal egalitarianism is the principle under which each individual is subject to the same laws. क्या होता है equality before law? You see this word? That is egalitarianism. ये क्या होता है? It is the doctrine that all people are equal and deserve equal rights and opportunities. You can say सिद्धांत. ठीक. So equality before law क्या है कि जिसमें हर कोई भी बंदा हो, कोई भी पर्सन हो, वो किसी को भी बिलोंग करता हो, कहीं से भी बिलोंग करता हो, किसी पर्टिकुलर एरिया से बिलोंग करता हो, किसी पर्टिकुलर पावरफुल पर्सन से बिलोंग करता हो, किसी पुअर फैमिली से बिलोंग करता हो, इससे लॉ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि उसके सामने सब बराबर हैं. ठीक है. दिस इज़ द इक्वलिटी बिफोर लॉ. द जुडिशरी ऑफ इंडिया इज़ एन इंडिपेंडेंट बॉडी. अगेन दे आर सेइंग जुडिशरी कैसी है इंडिया की? इट इज़ एन इंडिपेंडेंट बॉडी एंड इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव बॉडीज़ ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट. जो भी इंडियन गवर्नमेंट की जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव बॉडीज़ हैं वो उनसे अलग है. ठीक. द जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया हैज़ स्ट्रैटिफाइड इनटू वेरियस लेवल्स. इंडियन जुडिशियल सिस्टम क्या है? स्ट्रैटिफाइड. सी दिस वर्ड. Stratified. What is the meaning of stratified? Stratified means to organize something in layers. ठीक. मीन्स जो इंडियन जुडिशरी सिस्टम है ये कई लेवल्स में है, इसके कई स्टेप्स हैं. ठीक. ये कई पार्ट में डिवाइडेड है, यू कैन से. एट द अपेक्स इज़ द सुप्रीम कोर्ट. इसके जो लेवल हैं, जो लेयर्स हैं, उसके अपेक्स में कौन है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अपेक्स? apex means top. okay, the top पर कौन है इस लेवल पे? इट इज़ द सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट सबसे टॉप कोर्ट होता है विच इज़ फॉलोड बाई, और उसके बाद किस? हाई कोर्ट्स एट द स्टेट लेवल. स्टेट लेवल क्या होते हैं? हाई कोर्ट्स होते हैं. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड एट द विलेज एंड पंचायत लेवल. फिर उसके बाद कौन से कोर्ट्स होते हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं. किस लेवल पे? डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और विलेज एंड पंचायत लेवल पर. नाउ अंडरस्टूड वेरियस लेवल्स. See this picture, you can understand. Hierarchy of the Indian judicial system. ठीक. जो स्टेप्स हैं, जो लेवल हैं, वो एक सीक्वेंस में होते हैं जिसे हायरार्ची कहते हैं. क्या है? देखो सबसे पहले क्या है आपका? what is at the top? which body has the top? which court? Supreme Court. Supreme Court is at the top of this
judicial system. And after this, high courts. उसके बाद कौन से कोर्ट्स होते हैं? हाई कोर्ट्स के. फिर कौन से होते हैं आपके? देखिए, सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स एट डिस्ट्रिक्ट लेवल. सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और इसमें सिविल कोर्ट्स एंड क्रिमिनल कोर्ट्स होते हैं. और यू सी दिस वन, स्पेशलाइज्ड ट्राइब्यूनल्स, ये स्पेशल कोर्ट्स होती हैं. ठीक है, ये अ टाइप ऑफ कोर्ट होती है विद द अथॉरिटी टू डिसाइड हु इज़ राइट इन पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ डिस्प्यूट. मीन्स पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिस्प्यूट. सी, see first one is service tribunals. मीन्स सर्विस ट्राइब्यूनल्स मीन्स ये इस डिपार्टमेंट की जो भी प्रॉब्लम्स होगी वो इस कोर्ट में सॉर्ट आउट होंगी, वहाँ सेटल्स होंगी. टैक्स ट्राइब्यूनल्स, इसी तरह से देखिए डेब्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल्स, रेलवे ट्राइब्यूनल्स, कंज्यूमर कोर्ट्स, लेबर कोर्ट्स एट्सेट्रा. मीन्स दीज आर द स्पेशल टाइप ऑफ कोर्ट. ठीक. और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन सी है आपकी? सिविल कोर्ट्स होती है और क्रिमिनल कोर्ट्स होती है. व्हाट इज सिविल कोर्ट्स एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू? सिविल कोर्ट्स एंड क्रिमिनल कोर्ट्स. क्रिमिनल कोर्ट्स यू कैन अंडरस्टैंड, जहाँ पे क्राइम्स से रिलेटेड हेयरिंग होती है. ठीक, किसी ने कोई क्राइम कर दिया है तो क्रिमिनल कोर्ट्स में जाएगा. सिविल कोर्ट्स में फिर क्या होगा? वहाँ बैठ के क्या करेंगे? वहाँ अंताक्षरी खेलेंगे सिविल कोर्ट्स में. सिविल कोर्ट्स में भी क्या होगा, यानी कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन है, उसके कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है. ठीक, तो प्रॉपर्टी रिलेटेड प्रॉब्लम वो क्रिमिनल कोर्ट में नहीं अपील करेगा. वो कहाँ जाएगा? he will go to the civil courts. And something is related to rights, okay, someone's right, he will go to the civil courts. He will not go to the criminal courts. Now you understood? The first is Supreme Court. At the top, Supreme Court, and it is followed by high courts. एंड देन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप आ जाएँ तो सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, जिसे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं ये दो तरह के होते हैं आपके, सिविल कोर्ट्स एंड क्रिमिनल कोर्ट्स. देन देयर आर सम स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल्स कोर्ट्स फॉर सम स्पेशल केसेस फ्रॉम सम स्पेशल डिपार्टमेंट्स लाइक सर्विसेज, टैक्स, डेब्ट रिकवरी एंड रेलवे, कंज्यूमर, लेबर एट्सेट्रा. I hope you understood what I taught you. What is the judicial system of India, and what is the structure of this judicial system, and when the high courts were established in India first time, okay, and when Supreme Court replaced the federal courts. So all these things we have discussed now. So do one thing, note down hard words, and please read this page 2 times, okay? After that you will get understand that what I taught you, and just note down hard words and write down their meanings in English and Hindi both. Okay class, thank you for today.